अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया तो याद रखिए, एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इस बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य है। Dan setelah lihat video ini, aku jadi ingat tentang sejarah perang salib. Karena salah satu pemicu kenapa orang Eropa itu mau perang salib besar-besaran itu, karena di saat itu pendeta atau paus yang ada di Roma menyebarkan hate speech atau hoax seperti yang dilakukan pendeta Hindu di video yang tadi. Assalamualaikum ikhwan fillah. Pada video kali ini kita akan membahas video viral pendeta Hindu yang ingin menyerang Ka'bah. Berikut videonya. आज समय है इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का। मुझे हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है, वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको मक्केश्वर महादेव को जीतना ही पड़ेगा। आपको कैंसर परवार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। और आज का सनातनी हिंदू ये कर सकता है, बस आपको अपने धर्म के प्रति समर्पित होना होगा। और हमने यदि धर्म की रक्षा के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया तो याद रखिए, एक एक मंदिर टूटना है, एक एक बेटी बलात्कार के बाद मंडियों में बेची जानी है। इस बातों को याद रखिए, क्योंकि यही उनका लक्ष्य। Oke sahabat Villa, sebenarnya udah banyak yang mereaksi pendeta Hindu ini. Dan kita semua sebagai umat muslim tahu apa yang dikatakan pendeta Hindu ini hoax ya. Itu kayak ada orang Indo yang menyebut kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di Sleman dan Candi Borobudur itu peninggalannya. Ini kan cocok logi. Dan yang dikatakan pendeta Hindu ini lebih ngawur lagi. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah itu pun gak ada yang menyembah dewa Hindu. Mereka menyembahnya Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan lain-lain yang merupakan nenek moyang mereka. Dan setelah lihat video ini, aku jadi ingat tentang sejarah perang salib. Karena salah satu pemicu kenapa orang Eropa itu mau perang salib besar-besaran itu, karena di saat itu pendeta atau paus yang ada di Roma menyebarkan hate speech atau hoax seperti yang dilakukan pendeta Hindu di video yang tadi. Jadi, orang-orang Kristen di seluruh Eropa ini dikompor-kompori dengan berita hoax. Contohnya, orang-orang Muslim makan daging bayi, orang-orang Muslim memperkosa orang-orang Kristen, mengkencingi gereja makam suci yang ada di Yerusalem, dan seterusnya. Akhirnya, pecahlah perang salib, dan sayangnya di saat itu terjadi perpecahan di antara umat Islam. Jadi di saat itu umat Islam udah bukan satu kekhalifahan lagi, tapi udah terbagi jadi kerajaan-kerajaan kecil. Ya akhirnya diambillah itu Yerusalem oleh pasukan salib. Dan setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya direbut kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kunci dari keberhasilan Salahuddin adalah berhasil menyatukan umat Islam di bawah satu bendera. Dan kita sekarang tahu kenapa Palestina bisa direbut Israel. Ya karena negeri-negeri kaum muslimin ini berpecah belah dan memiliki tujuannya masing-masing. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian, sebagaimana berebutnya orang-orang yang menyantap makanan di atas nampan. Salah seorang sahabat bertanya, apakah karena saat itu jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, justru saat itu kalian banyak.
Namun kalian bagaikan buih di lautan. Allah akan membuang rasa takut mereka kepada kalian dan akan memasukkan wahan di dalam hati kalian. Apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Tanya salah satu sahabat. Beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Dan kita tahu di Indonesia umat Islam ini dipecah belah oleh para buzzer RP dengan hoax yang mereka produksi. Di sisi lain, rakyat kemudian dijejali dengan konten pamer harta dan konten gak bermutu lainnya yang menimbulkan penyakit wahan. Ya, kesimpulannya Ka'bah pasti dijaga oleh Allah. Tapi bagaimana dengan umat muslim di India yang didiskriminasi di sana? Selama umat Islam tidak bersatu, maka sulit untuk menghentikan kezoliman mereka. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.